क्वेश्चन नंबर 33 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 33, due to addition of impurities the modulus of elasticity decreases, increases, remains constant, may increase or decrease। वो डिपेंड करता है मटेरियल के पास बेटा। अगर मटेरियल के अंदर इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ज्यादा है समझो तो इलास्टिसिटी ज्यादा रहेगी, अगर कम रही तो कम रहेगी। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल। सो प्योरली इट डिपेंड्स ऑन द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द इंप्योरिटीज। अगर इंप्योरिटीज है उसके अंदर और उसकी इलास्टिक नेचर बहुत ज्यादा है तो इट विल बी मोर इलास्टिक। इंप्योरिटी है लेकिन उसकी इलास्टिसिटी कम है तो नहीं होगी, तो ऑब्वियसली इट मे इंक्रीज और इट मे बी डिक्रीज। shear strain is possible in, बताइए, shear strain is possible in solids only, liquids only, gases only or all of the above। shear मतलब क्या है, जैसे क्यूब के लिए होता है, isn't शेप चेंज होता है ना, तो सॉलिड्स के लिए होगा, लिक्विड्स के लिए बल्क मॉडुलस होगा ना बेटा, गैसेस और लिक्विड के लिए। तो सॉलिड्स के लिए क्या हो जाएगा, shear मॉडुलस होगा, which changes the shape। clear? The shear strain is possible in solids only। चलिए next one, the ratio of radii of two wires of the same material same है बेटा, same material है, is 2:1। if these wires are stretched by equal forces equal है, the ratio of the stresses produced in them will be equal to how much। stress का फॉर्मूला क्या है बेटा, stress is equals to force by area, stress is equals to force divided by area। area can be written as what beta, pi into your r square, isn't it? So I can write this one as of your f divided by pi into your r square। So I can write now the stress relation right now, stress और area का relation same हो जाएगा। So I can write here stress of the first material divided by stress of the second material, same force है तो force cancel हो जाएगा, pi भी cancel हो जाएगा। So this will be equal to your r2 square divided by r1 square। ठीक है ना, is that clear? Inversely proportional ना बेटा, s1 by s2 is equal to r2 square by r1 square। The ratio of the radii r, यानी r1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, r2 की वैल्यू कितनी है, 1, यानी r स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो गया 2r का होल स्क्वायर, r स्क्वायर विल गेट कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/4, यानी 1:4 आ जाएगा बेटा आंसर। आंसर विल बी 1:4। बी केयरफुल बेटा। क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट वन 36, a load of 2 kg produces an extension of 1 mm, यानी extension दे रखा है, फिर wire of 3 meter in length and 1 mm in diameter, the Young's modulus of the wire will be equal to your how much। चलो बताइए, Young's modulus का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है ऑलरेडी। Young's modulus का फॉर्मूला क्या है बेटा, y is equals to your f into your l divided by a into your extension। एरिया को कैसे लिख सकता हूँ मैं, पाई इंटू आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, और रेडियस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो रेडियस विल बी इक्वल टू डायमीटर बाई 2 हो जाएगा, और एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा पाई इंटू योर आर स्क्वायर। चलो हो गई बात, तुमने सबकी वैल्यूज दे रखा है प्रॉब्लम में आपको। लोड ऑफ 2 kg इज गिवन फॉर मी, मतलब लोड मतलब क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, फोर्स, force is right now for me 2 kg यानी mass into gravity, so that will be equal to your m into g into l divided by pi into r square। r की वैल्यू कितनी है बेटा, d square divided by 4 into your extension। the Young's modulus will be equal to how much, बस वैल्यूज डाल दीजिए। mass is how much for me 2, g की वैल्यू हो गई 10 into length of the wire is given as of your 3 meters divided by पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 3.14 into diameter is given in the problem how much, 1 mm। 1 mm को आप मीटर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, so 1 mm will be equal to 10 to the power of -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 10 to the power of कितना हो जाएगा बेटा, 1 mm will be equal to diameter। और एक्सटेंशन भी दे रखा है प्रॉब्लम में, एक्सटेंशन कितना दे रखा है 1 mm, तो 1 mm मतलब ये कितना हो जाएगा, diameter is given as of your 1 mm, extension is also given as 1 mm, यानी ये हो गया 10 पावर -3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 into 10 to the power of -3। डन, तो 2 10s are 20, 20 into 3 into 4 डिवाइडेड बाय 3.14 into ये बन जाएगा पूरा 10 पावर -9 -6 -3। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दैट विल गिव मी द आंसर। करके बताइए जल्दी से,
ऑप्शन सी आ रहा है। मरियम, एक ही स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, बाकी के लोग। निदा अफरीन, वेरी गुड। और एस बेटा 7.48 तक आ जाएगा। चलो नेक्स्ट वन, 37. Select the correct alternatives. Elastic forces are not always conservative. Elastic forces are always conservative. Elastic forces are conservative only when Hooke's law is obeyed. Elastic forces are not conservative. देखो बेटा, in every force or every value of the force material, जब आप force लगा रहे हो ना, it will try to regain its shape if it is an elasticity. Therefore, elastic forces are not always conservative in nature, isn't it? कभी कोई मेटेरियल वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ सकता है, कभी कभी it will not come back, but it may have the elasticity property. So it depends upon the state. So I can say that select the correct alternative बोल रहा है. Elastic forces are not always conservative. Elastic forces are always conservative. Elastic forces are conservative only when Hooke's law is obeyed. Elastic forces are not conservative. So the best option I can write, elastic forces are not always conservative. Done. Good question, beta. Theoretical. हाँ, elastic forces are conservative only when Hooke's law been obeyed. क्यों है? कंप्लीटली हुक्स लॉ के अंदर कंजर्वेटिव होता है बल्कि कंडीशन नहीं है ना बेटा, बेंडिंग भी हो सकता है. स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन. ओके, so at every value of the force material is not able to regain its original shape बेटा, तो थोड़ा चेंज तो आ जाएगा उसमें. तो इलास्टिक फोर्सेस आर नॉट ऑलवेज कंजर्वेटिव बोल के लिख लीजिए. हम लोग पूरा इलास्टिसिटी ऑफ ए मेटल ऑफ वायर के बारे में बात कर रहे हैं. कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब क्या? ओरिजिनल पोजीशन को आना चाहिए. जब आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो आपने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया, तो विद इन दिस वन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन. बट व्हेन यू आर बेंडिंग इट लूज इट्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की इलास्टिसिटी कम हो जाएगी ना बेटा. नो डाउट इट इज कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, बट इलास्टिक नेचर इसका कम हो जाएगा लिटिल बिट. तो एक से दो बार आप करोगे, उसके बाद परमानेंट, फिर उसके बाद परमानेंट, फिर उसके बाद ऐसा कुछ. So the best option for the given situation is right now for me elastic forces. Elastic forces are not always conservative. Done. Question number 38. Young's modulus depends on stress applied on material, strain produced in material, temperature of the material, all of this. Young's modulus depends on क्या होगा बेटा? डी. स्ट्रेन पे कौन प्रोड्यूस करेगा? यंग्स मॉडुलस. यंग्स मॉडुलस इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी बेटा. Why is it stress by strain पे मत जाइए. यंग्स मॉडुलस depends on material. Depends on material. अब ये मटेरियल को आप हीट करोगे या डिक्रीज करोगे तो इसके इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी. सो इट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ मटेरियल. इट डजंट डिपेंड अपॉन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. हम लोग लिखते हैं y is equals to stress by strain बोल के लिखते हैं, बट दिस इज अ कांस्टेंट है ना. दिस कांस्टेंट इज डिपेंडिंग ओनली ऑन नेचर ऑफ मटेरियल. इस मटेरियल को आप हीट करोगे तो इट विल लूज इट्स इलास्टिसिटी. सो y वैल्यू डिपेंड्स अपॉन इट्स टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल. डन. चलिए, the value of Young's modulus for perfectly rigid body is, see for a perfectly rigid body the condition is that there should not be any elongation. यानी elongation इसमें कितना होना चाहिए अपने को? जीरो for any value of force. अगर हम लोग एक्सटेंशन को अगर जीरो लिख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? y is equals to f into l divided by a into extension. यानी this will be f into l divided by extension into zero. Anything divided by zero will be what? Infinity. So Young's modulus will be your infinity. Very good. A wire of length L and cross-sectional area is been made of a material of Young's modulus Y. The work done in stretching the wire by an amount of x will be equal to your direct formula based formula है. Work done का formula क्या होता है बेटा? Work done is equals to your half into force into extension. और Young's modulus क्या होता है? Y is equals to f into L divided by a into your extension. तो फोर्स निकाल सकता हूँ इसमें से F is equals to YA into extension divided by L. तो वर्क डन का फॉर्मूला कितना बन गया? W is equals to half into this is YA into your x divided by L into your x. यानी ये बन जाएगा मेरे पास YA into your x square divided by 2 into your L. So this is the work done. Alright, adjustable. So it is YA into x square divided by 2L. Next one.
Spherical ball contracts in volume by 0.01% when subjected to a normal uniform pressure of 100 atmosphere. The bulk modulus of this material will be equal to your how much? Direct question है, try कर ले कोई वॉल्यूम दे रखा है बेटा, प्रॉब्लम है मेरे को, isn't it? So ball contracts by volume of 0.01% when subjected to a normal uniform pressure of your pressure भी दे रखा है 100 atmosphere. Bulk modulus will be equal to how much? अपने पास bulk modulus का फॉर्मूला है, so bulk modulus will be equal to minus of delta P divided by delta V divided by V. And I can write this one as delta V by your V is equals to minus of your pressure divided by bulk modulus. ये कितना दे रखा है 0.01%, यानी minus 0.01 divided by 100 into your original volume कितना हो जाएगा delta V by your V, isn't it? 0.1% of its volume V divided by V. तो ये भी पूरा चला गया तो ये 0.1% हो गया. That is equals to bulk modulus is right now for me how much beta? 100. So it is your 100 divided by your V into ये कितना दे रखा है 1 atmosphere. 1 atmosphere कितना होता है बेटा 10 to the power of 5 Pascal approximately. यानी this will be equal to ये minus minus चले गया. So simplify कर लीजिए. This will come out for me. Bulk modulus is equals to 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So this will be equal to 10 power 11. 10 power 11 Newton per meter square. 10 power 11 Newton per meter. अच्छा 1 atmospheric pressure कितना लेते हैं यहाँ पर जनरल एक्चुअल फॉर्मूला 1.01 into 10 to the power of 5. मैंने यहाँ पर डायरेक्टली 10 power 5 ले लिया. अगर 1.1 में लोगे तो इट इज 1.01 into 10 to the power of 11 Newton per meter square आ जाएगा. ठीक है ना, A will be the answer for this. ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है चलो. Which of the following is the graph shows the stress and strain variation for elastomers? ये directly NCERT का क्वेश्चन है बेटा. Stress and strain का एक्सपोनेंशियली होता है, that is like रबर के लिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं elastomers रबर्स के लिए वगैरह. So what is happening? Stress varies exponentially with your strain. So C will be the best option for this. NCERT का क्वेश्चन है बेटा. Question number 43. A steel rod has a radius of 10 mm and a length of 1 meter. A force stretches it along its length and it produces a strain of 0.32%. Young's modulus of the steel is 2 into 10 power 11 Newton per meter square. What is the magnitude of the force stretching the rod part of relation? ये भी direct question है basically. Strain दे रखा है problem में अपने को. Produces a strain. Strain कितना दे रखा है? Strain मतलब change in length by original length. Change in length by original length, that is equals to 0.32% दे रखा है. ठीक है ना. डेल्टा एल बाई एल विल बी इक्वल टू यानी डेल्टा एल बाई और एल विल बी इक्वल टू 0.032 डिवाइडेड बाय 100. isn't it? What is the magnitude of the force पूछ रहा है बेसिकली इसके अंदर. So magnitude of the force मतलब क्या हो जाएगा? Y is equals to F into L divided by A into your extension. Extension is nothing but F your E. Steel rod has a radius. Radius मतलब area में ले लीजिए. Area is equals to pi into your R square. Pi की value 3.14 into radius is given as of your कितना दे रखा 10 mm, यानी दिस विल बी इक्वल टू योर 10 mm मतलब 10 पावर 3 माइनस 3 यानी इसका होल स्क्वायर. ठीक है ना. और यंग्स मॉडुलस ऑफ द मेटल भी दे रखा है प्रॉब्लम में. y is equals to 2 into 10 to the power of 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पूछ रहा है. f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डायरेक्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन है तो f की वैल्यू इसमें से निकाल लीजिए. f is equals to कितना हो जाएगा बताइए? f is equals to y into area into extension divided by l. So that will be equal to your y की वैल्यू कितनी है 2 into 10 to the power of 11 into area value is 3.14 into 10 power 2 का 10 power 2 whole square मतलब 100 divided by 10 power 6 divided into area into extension. Extension कितना दे रखा है प्रॉब्लम में? कितना दे रखा है एक्सटेंशन? into a by a लिख दिया, एरिया लिख दिया मैंने 10 पावर. उसके बाद चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ. चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इज 0.32 डिवाइडेड बाय 100. ये 100 चले गया 10 पावर 6. यहाँ पर बचा कितना 10 पावर 5. सो इट इज 2 5 10 भी हो जाएगा यहाँ पर. दिस इज 10 पावर 5 हो जाएगा. तो दिस वन इज 2 into 10 to the power of 5 into 3.14 into 0.32. ये देख लीजिए कितना आ रहा approximately. B आ रहा है. Okay चलिए, I don't know, I'm leaving the calculation for you. 201 किलो न्यूटन.
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए बेटा, 44 sorry. The proportionality limit of this steel is 8 into 10 to the power of 8 Newton per meter square and its Young's modulus is 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square. The maximum elongation of 1 meter long steel wire can give without exceeding the elastic limit will be equal to how much? Direct question. Proportionality limit दे रखा है प्रॉब्लम में आप लोग को, यानी proportionality limit मतलब क्या? Young's modulus. Proportionality limit of the steel मतलब क्या हो जाएगा? Stress. y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y की वैल्यू दे रखा है प्रॉब्लम में 2 into 10 to the power of 11. The proportionality limit of the steel is 8 into 10 to the power of 8 Newton per meter square. Yani Newton per meter square is the stress. Stress is equals to Newton per meter square. Yani 8 into 10 to the power of 8 Newton per meter square बन जाएगा. And the maximum elongation of length, original length दे रखा है 1 meter. यानी L will be equal to 1 meter. Can withstand without exceeding how much extension? यानी अपने को पूछ रहा है basically इसके अंदर extension. E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? So what I can write here, stress is equals to y into strain. Strain मतलब delta L divided by L. Stress दे रखा है अपने को, delta L की वैल्यू पूछ रहा है, यानी delta L will be equal to stress into L divided by y. Stress is 8 into 10 to the power of 8. Length is 1 meter divided by Young's modulus 2 into 10 to the power of 11. 1s are 2 4s are 4 में आ गया, so it is a 4 into 10 to the power of 8 divided by 11. So that will be 4 mm. Direct question. Very good. Next question, 45. In a series combination of the copper and the steel wires of the same length and same diameter, a force has been applied at one end of their ends, while the other end is being kept fixed. The combined length is increased by 2 centimeter. The wires will have the same stress, same strain, different stress and different strain, different stress and same stress and different strain per deflection. देखो अपने पास स्ट्रेस का फॉर्मूला है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया. फोर्स सेम है तो एरिया भी सेम है तो स्ट्रेन भी हो जाएगा. तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. L is same but it is different in Young's modulus, metal different है ना, तो delta L will be different, so strain is also different for. तो series combination में copper and the steel wire of same length and same diameter, force has been applied at one end, यानी series में force same रहेगा, while the other end is kept fixed. The combined length is increased by 2 mm. This wire will have the same stress and same strain, different stress and different strain, different stress and same stress and different strain. Obviously it will have the same stress but strain or elongation will be different. Very good. ये तो कल अपन कर चुके हैं बेसिकली. चलो हिट ट्रांस करते हैं, थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से. ट्राई कर लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन आंसर बताइए. Two metal spheres have their radii r and 2r and they emit the thermal radiations with maximum intensity at a wavelength of lambda and 2 lambda respectively. The respective ratio of the radiant energy emitted by them per second will be equal to how much? Wings displacement law beta. Temperature is inversely proportional to your lambda. And I can write here T1 by over T2 is equals to lambda 2 divided by lambda 1. Isn't it? So lambda 2 is 2 lambda, lambda 1 is lambda. This one will be equal to 2. And heat produced is directly proportional to how much better? Radiant heat produced by them per second. Yani power is equals to your E into A into sigma into T power of your 4. And this power will be directly proportional to your area and T power of your 4. So heat energy मतलब P1 divided by P2. So constant cancel हो जाएगा. तो एरिया भी लिखना है अपने को A1 divided by A2 into your T1 to the power of 4 divided by T2 to the power of 4.
A1 की वैल्यू 4 पाई इंटू योर आर स्क्वायर, A2 की वैल्यू 4 पाई इंटू इसका रेडियस दे रखा है प्रॉब्लम में 2r स्क्वायर इंटू T1 बाई T2 અને T1 बाई T2 का वैल्यू दे रखा है 1 बाई 2 અને 2 टू द पावर ऑफ 4 हो जाएगा ना, this will be 2 power 4. If 2 pi r square will get cancelled, so this will be equal to 1 by 4 into your, this one is 2 power of your 4. कितना आ रहा है? 4:1, 4:1 आ गया। चलिए नेक्स्ट वन, if the temperature of the sun is decreased by, if the temperature of the sun is decreased by 1%, then the value of the solar constant का मैंने प्रॉब्लम फॉर्मूला लिखाया था, S is equals to your how much one? S is equals to your capital R divided by small r का whole square into sigma into t power 4. So solar constant is directly proportional to your t power 4. So I can write here delta S divided by S, परसेंटेज में लिख रहा हूँ, तो ये हो गया 4 into delta T divided by T. डेल्टा टी बाई टी कितना दे रखा है बेटा, डिक्रीजेस बाय 1%, यानी डेल्टा एस डिवाइडेड बाय एस विल बी इक्वल टू वर, दिस इज 4 into -1%, डिक्रीज दे रखा है ना तो माइनस लिख रहा हूं, तो दैट विल बी इक्वल टू -4%. बी विल बी द आंसर. क्लियर? चलिए थर्ड वन, the coefficient of linear expansion of the brass and the steel are L1 and L2. When we take this brass rod of length L1 and steel rod of length L2, it's 0 and difference in their length is L2 minus L1 is remaining for me same at all temperatures. ये मैंने क्लास में बहुत बार पढ़ाया था, अगर difference in the length is remaining for me the same, then the condition is right now for me L1 alpha 1 will be equal to your L2 alpha 2. Direct question. Next one. The density of water at 20 degrees Celsius is 998 kg per meter cube and at 40 degrees Celsius is 992 kg per meter cube. The coefficient of volume expansion of the water will be equal to your how much? चलिए बताइए, डेंसिटी का फॉर्मूला याद है आप लोग, डेंसिटी ρ2 will be equal to your ρ1 into 1 minus gamma into your delta T. तो ρ2 की वैल्यू कितनी दे रखी है प्रॉब्लम में, 992 is equals to 998 into 1 minus gamma into your 20. Is it clear बेटा? ठीक है ना, डायरेक्ट प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूशन है, गामा की वैल्यू निकालना है, गामा की वैल्यू निकालो कितना आ रहा है, देन आया किसी को आंसर, 992 divided by 998 is equals to 1 minus 20 times of gamma. तो gamma की वैल्यू निकाल दो, that will give me the answer. BRR, okay, 3 into 10 to the power of -4. Next one, 3 rods of same dimensions have thermal conductivities at 3K, 2K and K. They are arranged as shown with their ends at 100 degrees Celsius, 50 degrees Celsius and 0 degrees Celsius. The temperature of their junctions will be equal to how much? Incoming heat must be equal to outgoing heat बेटा, यहाँ पर जितना heat आ रही है I, that will be equal to your I1 and this will be equal to your I2. यानी यहाँ पर temperature कितना है मेरे पास 100, thermal conductivity कितनी है K, फॉर्मूला याद है आप लोगों को, dQ divided by dt, टेम्परेचर ग्रेडियंट का 200 by 3 आ रहा है, I don't know, okay. तो टेम्परेचर थर्मल कंडक्टिविटी के इनटू, यहाँ पर टेम्परेचर में थीटा ले ले रहा हूँ, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 100 माइनस ऑफ योर थीटा, isn't it? रेजिस्टेंस तो सेम ही रह जाएगा हीट कंडीशन के लिए, दैट इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ से जा रहा है अपने को थर्मल कंडक्टिविटी इसका कितना है 2K इनटू ये हो जाएगा टेम्परेचर कहाँ से हो जाएगा, ये टेम्परेचर से टेम्परेचर जा रहा हूँ, दैट इज थीटा माइनस ऑफ योर 50,
isn't it? अपने को थीटा की वैल्यू निकालना है, isn't it? Plus this will be equal to theta minus of your 0 degree Celsius into thermal conductivity is nothing but K. आ गई बात समझ में? क्लियर है? सिंप्लीफाई कर लीजिए, मैं क्लास में भी करवा दिया था 200/3. वेरी गुड. नेक्स्ट वाला देखो. The slab of the stone of area 0.36 meters square and thickness 0.1 meter is exposed to the lower surface of the steam at 100 degrees Celsius. The block of ice at 0 degrees Celsius rests on the upper surface of the slab. In 1 hour, 4.8 kg of ice is melted. The thermal conductivity of this slab will be equal to how much? डायरेक्ट फॉर्मूला है थर्मल कंडक्टिविटी का, याद है आप लोग को? हीट सप्लाइड कितना है मेरे पास यहाँ पर? Conversion factors very important है बेटा. Latent heat of fusion of ice is given as 3.36 into 10 to the power of 5 होना चाहिए. It is 10 to the power of 5. It is not 1.5. यानी heat per second हम लोग ले रहे हैं, यानी heat supplied will be equal to how much बेटा? Heat supplied will be equal to your, यानी I can write here heat supplied is dq by dt is equals to your k into a into temperature difference divided by L. Heat supplied will be equal to your m into your L. कौन से सिस्टम में दे रखा है अपने को? थिकनेस भी दे रखा है. 1 आवर में 4.8 kg आइस मेल्ट बोल रहा है. तो व्हाट विल बी द थर्मल कंडक्टिविटी, यानी इसकी हो गई यहाँ पर 3.36 into 10 to the power of 5 into एनर्जी है ना, Q is equals to m into your L. एनर्जी इज गिवन इन टर्म्स ऑफ जॉल पर kg, लेकिन अपने को कैलोरीज में होना, तो कैलोरीज में होना बोले तो इनटू 4.8 डिवाइडेड बाय 3600, ऐसा कर लीजिए. दैट विल गिव मी द आंसर. के की वैल्यू आ जाएगी. तो आई एम राइटिंग हियर, यू सी कन्वर्शन इंपॉर्टेंट है बेटा. 3.36 into 10 to the power of 5 जॉल को हम लोग एसआई सिस्टम को सीजे सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, बिकॉज जॉल में आंसर रखना है अपने को. तो ये हो जाएगा जॉल की वैल्यू मतलब 4.8 डिवाइडेड बाय 1 into 3600 1 आवर. That will be equal to कितना है? थर्मल कंडक्टिविटी निकालना के इनटू एरिया कितना दे रखा है? 0.36 दे रखा है इनटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 0 से लेके 100 तक, यानी 100 माइनस 0 0 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एल. एल की वैल्यू कितनी दे रखा है? थिकनेस है यहाँ पर, दैट इज 0.1. इसको कर लीजिए, के की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, आई डोंट नो, यू चेक विद द आंसर वंस. 7th one देख लीजिए बेटा. When 1 kg of ice at 0 degree Celsius melts to water at 0 degree Celsius, the resulting change in entropy. Entropy मतलब आप लोगों को केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा. Change in entropy will be equal to change in entropy disorderliness. Change in entropy मतलब delta S will be equal to कितना heat आपने observe किया? It is your heat observed by temperature at that instant. टेम्परेचर एट दैट इंस्टेंट. अगर फॉर्मूला याद नहीं है किसी को तो लिख लीजिए, आप लोगों को केमिस्ट्री में भी आया होगा. एंट्रोपी इज इक्वल्स टू हीट ऑब्जर्व्ड बाय योर टेम्परेचर. यस, हाँ, तो दैट इज नथिंग बट फॉर्मूला हो गया Q डिवाइडेड बाय T. सो डेल्टा S निकालना है अपने को. सो डेल्टा S इज इक्वल्स टू योर हीट गिवन इज हाउ मच फॉर मी? फॉर 1000 kgs, यानी इट विल बी 1000 into 1 kg का वैल्यू into योर m into your L. L की वैल्यू हो जाएगी 80 बिकॉज Q इज इक्वल्स टू योर m into L डिवाइडेड बाय T डिवाइडेड बाय टेम्परेचर. टेम्परेचर कितना है मेरे पास? 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन. ठीक है ना? जस्ट टेक द कैलकुलेशंस, यू विल गेट द आंसर इन द कैलोरीज. ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 8. For a black body at a temperature of 727 degrees Celsius, its rate of energy loss is 20 watt. And temperature of the surrounding is 227 degrees Celsius. If the temperature of the black body is changed to 12127, then rate of energy loss will be equal to how much? Stephen Boltzmann's का law relation लगा रहा है बेटा. dq divided by your dt is directly proportional to temperature of the body minus temperature of your surrounding. Net loss के लिए, यानी नेट लॉस के लिए कितना टाइम चेंज और रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी लॉस विल बी इक्वल टू हाउ मच? हीट कितना दे रखा है प्रॉब्लम में? 20 वाट, यानी पावर
isn't it? So it is your 20 divided by, I don't know, this is right now say for example x, दोनों के लिए लिख रहा हूँ, दो कंडीशंस के लिए, टाइम वैसे भी कैंसिल हो जाएगा. एक टेम्परेचर कितना है बेटा 1000 to the power of 4, सराउंडिंग का टेम्परेचर 5 power of your 4. सराउंडिंग टेम्परेचर इज हाउ मच फॉर मी, तय आएगा ना, डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा 1500 to the power of 4 minus 5 to the power of 4. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दैट विल गिव मी द आंसर. जो भी है कन्वर्शन देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना. चलिए नाइन्थ वन. A black body at 227 degrees Celsius radiates the heat at the rate of 7 calorie per centimeter square. At a temperature of 727 degrees Celsius, the rate of heat radiated in the same unit of time will be equal to how much? Radiant heat energy is directly proportional to, यानी dq by dt is directly proportional to your t power of your 4. इसको मैं r से लिख ले रहा हूँ, so r is directly proportional to t power of 4 लिख लेता हूँ. तो r1 by your r2 will be equal to t1 by your t2 to the power of your 4. Stephen's law, हाँ डायरेक्टली स्टेफेंस लॉ लगा ले सकते हैं, isn't it? So this one is like say first one is 7, next one मुझे निकालना है, t1 by t2 is right now Celsius में दे रखा है, तो add 273, so it is 500 divided by your 1000 to the power of 4. ये 2 zeros ये 2 0 चले जाएंगे, 5 1s are 5 2s are, तो x निकाल लीजिए, that will give me the answer for this one. I hope you can do this calculation right. 7 by x is equal to 1 by 2 power 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई. Next one, if the lambda m denotes the wavelength at which the radiant emission from the black body temperature T Kelvin is maximum, then what will be the relation? Obviously, Wing's displacement law का lambda by T is equals to constant, यानी lambda is inversely proportional to T power of -1. ठीक है ना. चलिए फॉर्मूला तो याद होगा ना, lambda into T is equals to lambda into T is equals to some constant T, so lambda is inversely proportional to T power -1. ठीक है ना, very good. Next one, the radius of the star is capital R and it acts as a black body. What would be the temperature of the star in which the rate of energy protection is given as a your Q? Stephen's law, Q is equals to your sigma E into sigma into A T power 4. Ordinary body के लिए, perfect black body के लिए emissivity कितनी होती है, 1 होती है ना. So for perfect black body, PBB, E value will be equal to 1. तो Q is equals to E की value 1 हो गई, तो sigma A T power 4. तो t power 4 will be equal to how much only q divided by sigma into your a, यानी t value will be equal to q divided by sigma, area will be equal to 4 pi into your r square to the power of 1 by 4. So b value will be the answer. Next one, अब ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है. If the transmission power of a surface is 1 by 9, reflective power is 1 by 6, what is an absorptive power? मैंने क्लास में करवाया था, t plus r plus a is equals to 1, यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a is equals to 1 minus t plus of your transmission power plus reflective power, and it is 1 minus, this will be 1 by 9 plus 1 by 6, यानी that will be equal to 13 divided by 18. B will be the answer. Done. चलो हेलो, क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए बेटा. नहीं है. Lesser than 1 minute है. नेक्स्ट 13 और 14 क्वेश्चन आप लोग अपने आप से सबसे कर लीजिए.